What is up? कैसे हैं आप on this awesome Saturday evening? Yeah, with this session हम लोग thermodynamics समाप्त करेंगे. इसलिए मैं थोड़ा अजीब टाइम पे कर रहा हूँ. I know usually I come live to you at 8:30 p.m. and I'm a little early today at 7 p.m. Because मुझे लग रहा है ये सेशन थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा. Let's see. If I teach you a little bit of advanced content, maybe you'll get stretched. So you guys let me know. Let's do a feedback thing. Without that, we'll manage. There is a small formula. Well, flow may I think it'll make sense to do it. This is not strictly the NCRT, but let's see. I think we have time and we'll do it. But I'll tell you explicitly, dekho, this part is not an NCRT, so if you want to skip it, go ahead and skip it. Okay. Okay, that's delta S ka formula, for any process. Let's start. पिछले सेशन में कुछ हमने न्यूमेरिकल्स किए थे. We'll do that at first. And NCRT wise, last के 2-3 पेज, that's what we're going to do. You want to see that? Let's see that. मेरी आवाज साफ आ रही है? Let me know in the comments if you can hear me and see me clearly. All right, let's open up NCRT as we usually do. Oops, ये क्या हो गया? NCRT भाई साहब खुल जाइए. Yeah, there you go. Yeah, it was minimized. One moment. Here we are. Okay, cool. So just it looks like NCRT में just 2-3 पेज. You've got this page, this awesome page right here. ये हम लोग थोड़ा बहुत कर चुके हैं. We'll look at this formula. इस formula का मतलब क्या है हम लोग थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लोर करेंगे. After that, we'll go ahead and we'll do a couple of questions. यहाँ पे सवाल है, हम लोग भी सवाल कर लेंगे. We'll talk about this delta S total and how it refers to a new state property called Gibbs free energy. यही तो नाम है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, है ना. कुछ चीजें यहाँ पे डेरिवेशन लिखी हैं. I'll explain these things. Yeah, NCERT goes over this very quickly, but I'll explain all of this. And then last bits of this would be this. Now it looks like this 3 page है, but I think ये थोड़ा abstract है. That's why we'll spend a little bit of time trying to understand these concepts. So let's get started. पहले what we're going to do is we're going to do a couple of questions. You guys like questions, right? So we'll start sessions off with questions. The heat of combustion, पिछले सेशन का सवाल है, of sucrose theory वहां पढ़ाई थी, is given to be some value. इसमें से कितनी हीट निकली जाएगी अगर इतना ग्राम सुक्रोज बर्न होगा. नाउ दिस इज लाइक अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. दिस इज वेरी लाइकली टू कम इन जेईई मेन और नीट. लाइकली मतलब इस टाइप का सवाल. कुछ आपको ओवरऑल हीट ऑफ कंबशन दे दिया. नाउ ऑल यू हैव गॉट टू डू इज फाइंड आउट कि हाउ मेनी मोल्स डज दिस रियली ट्रांसलेट इनटू. एंड थोड़ा बहुत इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना. बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, बिना बैलेंस के इट्स नॉट गोना वर्क. व्हाई? What is heat of combustion? The definition क्या है? You write the whole thing down. पहले what is given to you, this is given to you. पूरा आपको reaction लिखना पड़ेगा. You please try this, yeah, when I'm also doing this. Sucrose का mass क्या होता है? Maybe you already know this. If you don't, it's 342, right? How is it 342? It's 12. Oops. Hold on. Let me get this pen back, right back. It's 12 into 6 and 22 into 1 and 11 into 16. This number is a little weird. 176 हो जाता है ना? 160 plus 16, 11, okay. Plus 22. और ये तो 72 हो गया. तो looks like it ties in nicely. Hold on, मैंने कुछ गड़बड़ किया. 12 into 6, 72. 22 into 1, 11. 11 into 16. Is that 176, 160? Yeah, it sounds like it. So how did I get 342? This doesn't look like a 2. This looks like it's a whole number. Oh my god, क्या गड़बड़ी की? I'm going to bring out my calculator because I'm slow. But I'm quite sure it's 372. What did I do weird? Plus 22 plus 11 into 16. I'm pretty sure it's 11 into 16. नहीं, ये तो 270 हो गया. C12, H22, O11. Hey! See, this was the bad one right here. 12 into 12, right? एक कार्बन का तो मास 12 होता है ना, 6 थोड़ी ना होता है. और 12 है, yeah, plus. Yeah, that was the mess up there. Yeah, what's up, Astik? How are you doing? खैर, खुद कर लो, इसलिए it's good to do that. You gotta balance this out, and as I always tell you, यहाँ 12 मतलब यहाँ 12. यहाँ मतलब इसका कितना है? This 22, तो यहाँ पे 11, half of that, right? That's it. And rest you figure it out. So you got 12 as it is and 11 by 2. Okay, so this amount of oxygen you need 1 मोल C12H22 के लिए, ठीक है. तो 342 देता है इतना. But luckily you don't care about oxygen this one. हम लोग सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है. तो 342 ग्राम, this unitary method ना, 342 ग्राम देता है 1350 किलो कैल. तो 17.1 ग्राम कितना देगा? Well, luckily, looks like it's just 1 by 20 times. It looks like it's just simply going to be 1 by 20 into 1350. I think that's all we've got to do. And this is 600. Oh, 67.5. This is the answer. A, right? That's it. Doesn't take too much time. The moment you identify करना क्या है. If you don't identify क्या करना है, then थोड़ा मुश्किल हो सकता है. Easy enough question. Do you want anything to be explained here again? Here's the math. फिर से अगर आप ठीक से उसको करना चाहो, unitary method. So cancel करो. Yeah, 20, 0. 67.5. That is the answer right here. We good?
या हाँ, let's take another question. एक और सवाल कर लेते हैं. एक मिनट. This is funny, huh? It already has something written on it. One second, huh? Keep this thing. I'm just gonna mess around with my notes a little bit. It looks like मैं जो practice करा था वो चीज़ लिखी हुई. Shubhi also says answer दे. Okay, one moment. Give me a second, please. Yeah. So the thing is, I use two computers to do these things, and कुछ यहाँ पे इधर से उधर आ गया. Hold on. हाँ, just the whole thing is supposed to be. इसको हटा देते हैं, इसको delete कर देते हैं. Is it happening a lot? Oh, funny things. Huh. No way, dude. Okay, give me a second. It looks like it's sorted. So it didn't synchronize. I blame Microsoft. Yeah, I split. So it was a very big file. So I split it into two. So anyway, कहानियां aside, let's go back to what we were doing. दूसरा सवाल. So it's weird, okay? I use PowerPoint because PowerPoint has nice graphics and you can do funny things with it. But कभी-कभी PowerPoint, if you go over 100 slides, it doesn't work very well in this process. Okay, anyway, let's get back to this. Ethanol, heat of combustion of ethanol at constant pressure and temperature. Constant temperature मतलब we're talking about delta H. Sorry, constant pressure मतलब we're talking about delta H. Is found out to be some value minus Q मतलब कि heat release हो रही है. Hence, heat of combustion of ethanol at the same temperature at constant volume क्या होगा? कर सकते हो ना. Constant pressure मतलब QP is equal to delta H. QV is equal to delta U. So you know the relationship between these two. Yeah, what's up, smart? Astik. नहीं, अब तो आदत हो गई. OBS is not the issue. It's PowerPoint doing weird stuff because of synchronization stuff. But don't worry about all that. We are back here. We are back. इस सवाल को try करो. So I'm just going to use again, as always, पहली चीज है balance reaction लिखने की. Look, I know that we've been telling you if you use normality, you don't have to use balance equation. That's great, but यहाँ पे हम लोग कुछ और देख रहे हैं. हम लोग this is an extensive property, यार. The number of particles decide कि कितना heat release होगा. Yeah, that's why we got to balance and all of that. खैर, if you balance this out, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 डाल दिया. यहाँ पे 5 plus 1 6 है, तो यहाँ पे 3 डाल दिया because you've got 6 and 6. That's it. And you've got 2 plus कितना? 2 यहाँ पे था plus 3 by 2. Right? Hey, hold on. This seems like a weird number here. Yeah, this is not good. It's not 3. It is supposed to be 3 by. It's supposed to be 3 and 3.5. Right? हमेशा check करना चाहिए. So looks to me like something is being weird. No, hold on. This is even more interesting. Because इसमें already एक oxygen है. इसीलिए this gets balanced. Now you see, you can't do what you usually do. है ना? अगर आप उसको मग करने की कोशिश कर रहे हो, if you try and do it this way, I'm going to show you. If you do that formula CX plus H, CXHY plus O2 gives something, and you mug कि यहाँ पे X plus Y by 2 होता है, then you'll completely mess this whole thing up. You got to realize कि इसमें भी ऑक्सीजन भाई साहब बैठे हुए हैं. So यहाँ पे 4 ऑक्सीजन इधर के हो गए, 3 यहाँ पे 7 हो गए. तो this 6 here and 1 7. That's it. So be careful about balancing. ठीक है, this is a lesson in balancing. I know you're very confident, you're good at this, but if you mess this, rest of it is going to be completely off. Why? Because the relationship between delta H and delta U has this delta Ng factor. अगर आप इसको balance गड़बड़ करोगे, if you write something like 3.5, you get a different value for this thing and none of the options will match. So that's why this is a nice question actually. But अगर इतना कर लिया then the answer is very direct. It's not complicated at all. Delta Ng क्या हो गया? 2 minus 3 मतलब -1. And be careful over here, okay? सबसे बड़ी बात ये है कि ये liquid है and not gas. Unless कोई आपको बोले कि this is happening at a temperature higher than 100 degree Celsius. अगर कोई आपको ये बोलता है तब आप इसको गैस कंसिडर कर सकते हो. I'll write this down here. I don't think you'll come across this sort of a question. Not in JEE में, not in NEET for sure. Almost certainly नहीं आएगा. But अगर इससे ज़्यादा हो तब वो गैस होगा. Otherwise it's going to be liquid itself. So we won't worry about this. So negative 1 आ गया तो मतलब खत्म. But here's the complication again, right? I write delta U is Q plus W. So delta U is delta H. सब यहाँ पे लिखा ठीक है तो यहाँ प्लस है. Okay, cool. But what are they asking for? Oh, they're asking us for delta U की value. Okay. Now what do we do? Okay, be careful. Substitute this minus Q इधर. ठीक है? This is going to be equal to minus Q, equal to delta U plus whatever this is. Yeah. When I write all of that down, this is what I get. Shouldn't take too much time, but got to be careful. That's all. ध्यान से करने वाली चीज है बस और कुछ नहीं है. ठीक है? Cool? Yeah. RT minus Q is the answer. Really, Ashwant?
All right, maybe ping me on ITChem and I'll try and connect you with whoever I know. This is my Telegram ID as well as my Discord ID. Ping me there with details and I'll forward it to senior people if that's actually happening. I thought classes were on as usual because मुझे बोला गया था कि if any class was being disrupted, I'll go and take class. मुझे बोला गया था. There were some things of maybe classes get disrupted. I'm like, I'm here, I'll take class. So मुझे आज पता ही नहीं गया, तो I thought things were good. But since you're saying this out, I will send this to my right now. I'll take a screenshot of this and I'll send it to them. Okay, let's start with this. Oh, तुम भी हो आस्तिका? You're also on this? Okay, you're also on Aakash values? That's nice to know. So, आज का सेशन में हम लोग ये बात करने वाले हैं. Spontaneity की will continue conversation and Gibbs energy and ये. Is it? और बताओ, please let me know. I have to communicate this with people, यार. Only when you guys tell me things will I get to know what's happening on the ground. And I'll push this to the relevant folks. So is it one class per subject or is it one class overall? ऐसा कुछ क्या? I'm just going to continue teaching here. Anything else you want to talk about? Ping me on Discord or on Telegram and we'll talk. I'm available, right? Same ID. I teach chem. जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मैं हूँ available always. Okay. So regularity structure की अगर कम हो रही है तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो रही है. इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने देखा ना, पानी when water was in a container like this, it's ordered. जैसे मैं पानी को गिराऊं, I'm not going to do that. पानी गिरेगा तो it flows all the way, right? So that's disorder. That's an easy way to look at it. And also solid, that's not wrong. Solid to liquid, regularity structure कम हो रही है. Liquid to gas, regularity structure कम हो रही है. Entropy बढ़ रही है. ठीक है, सबसे कम entropy होगी crystalline solid state में. NaCl crystals थे, सोडियम, क्लोरीन, ऊपर भी नीचे भी. ठीक है, this is actual structure of sodium chloride. It's got 6 chlorine atoms surrounding it. Solid state अगर आपको देखना हो तो मेरे सेशन से आप जाके देख सकते हैं. ठीक है, और सबसे कम एंट्रोपी होगी इसकी, सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी गैसियस स्टेट की. सो द जनरल आइडिया इज दैट कि अगर कोई भी सिस्टम कम रैंडम से ज्यादा रैंडम स्टेट में जाता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है. दैट्स द जनरल आइडिया. ओके, सो लेट्स डू अ बिट ऑफ बैक एंड फोर्थ. आप लोग मुझे बताइए कि इन सिस्टम्स में कहां पे डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन 0. प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस. सो ये है, दिस इज अ कूल एग्जांपल. ओके, यू हैव NaCl एंड इट्स रिएक्टिंग. लकली तुमको बता दिया, जेई में तो बताते नहीं कि प्रेसिपिटेट हो रहा है, क्या हो रहा है. There was a JEE advanced question where they didn't tell you that precipitation happening and you were supposed to do something with it. That was very interesting. But अगर आप lab manual ध्यान से पढ़ोगे, or even better if in your school that you're at, if you actually do these things in the lab manual, then you will know that this is a test. ये test है. This is a not confirmatory. This is a preliminary test. Chloride का अगर आपको सफेद precipitate मिल जाता है, so white precipitate. By the way, if you have AgBr or you have AgI, both of these are yellow precipitates, and ये सब preliminary test है देखने के लिए कि अच्छा AgNO solution के साथ अगर precipitate हो रहा है तो हो रहा है, क्या होगा और क्या बनेगा. ये बन गया and NaNO3. This is also aqueous. So clearly the number of moles that were less ordered वो कम हो रहा है. Aqueous थे मतलब दूर ions थे. Now AgCl is well, it's together, it's precipitated, it's more ordered. This is more ordered. So which you already know. अगर order बढ़ रहा है तो मतलब entropy कम हो रही है. It decreases. Do you agree with me here? I'm going to look at the chat now. I hope you guys are still talking about what we are talking about here. Suraj, what bro? Sure. These guys, look at this. Look at these brilliant people. यार मेधावी लोग हैं हमारे देश में जो आके ऐसा टाइम पास करते हैं. All right. So what's happening here? Do you understand यहाँ पे क्यों entropy decrease हो रही है? Yeah, I gave you a very long answer and what's happening here. Even revise, in fact, salt analysis अगर आपने नहीं किया लाइफ में तो, अगर आप 11th में तो नहीं किया होगा, 12th में है, it's high time you did salt analysis. ठीक है, मैंने सेशन भी उसके किए हैं. Please do that. Or if you don't have access to a lab, please read the lab manual. सब links हैं. Okay, what about ozone to oxygen? This is interesting, right? Ozone spontaneously oxygen में बदलता है थोड़ा बहुत और फिर वापस भी बन जाता है. This is a reversible reaction, but since we haven't taught you a reversible reaction, that we'll do it later on. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 mole of gas becomes 3 mole of gas. Just look at that. Don't worry about all these structures, वो सब बाद में देखेंगे. But 2 mole of gas becomes 3 mole of gas. मतलब कि number of moles of gas is increasing, right? इस केस में क्या होगा यहाँ पे? What do you think is going to happen? Suraj, nice try, but I don't care about Instagram, bro. You're talking to the wrong person if you think I have like literally almost 0 presence on Instagram. So your prank didn't really work out.
Yeah. So can you check this? अब क्या होगा? What do you think happens in this case? Does it increase or does it decrease? All right. I'm taking a screenshot of this and sharing with. Thanks, Astik and Ashwat. I'm going to just share that. What do you think happens here? It's very easy, right? अगर moles of gas increase हो रहे हैं, मतलब order कम हो रहा है, which means entropy increases. So I'm just going to put up here. Let's do another one. This is fascinating. Actually, ये बहुत मजेदार चीज है. Carbon. This is graphite, which is a standard state. 1 bar वाला. This is the C graphite जो हम लोग लिखते हैं ना reaction में. This is just that. This is a standard state. So diamond बन रहा है. ऊपर लिखा है, I don't know why I'm writing it फिर से, right? C in bracket. This is इसको allotrope बोलते हैं. अगर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है group 13, group 14 and all of that. So this is an allotrope of group 14 में जो उसके हैं. Check this out. What do you think happens here? Entropy कम होती है कि बढ़ती है? क्या होता है यहाँ पे? Entropy decreases or increases? What happens here? Shubhi, Astik, anybody else who's also watching this live? Input दीजिए, it'll be nice. कम होती है, absolutely. So this is interesting. अगर entropy कम हो रही है, okay. So मतलब कि order ज़्यादा हो रहा है, all right, sure. So this is not, it's an order structure. मतलब कि decrease हो रहा है, ठीक है, awesome. At the end of the session, I'll leave you with an awesome question. ठीक है? Entropy कम हो रही है, मतलब this process should be non-spontaneous, but stick around till the end. I'll tell you that this is a spontaneous process. मतलब कि क्या? Really, I'll prove it to you. Sort of. I'll prove. I'll give you the theory behind it. मतलब कार्बन अपने आप डायमंड में बनता है. हाँ भाई, बनता है. Why doesn't it happen then? Why don't you just take graphite in your room and wait ताकि वो डायमंड बन जाए? We'll see. अच्छा ठीक है, अगला चीज देखते हैं. Sublimation. ये तो self explanatory है. Solid बन रहा है गैस. What is happening here? Is it going to increase or decrease? कम होती है. ओके, उस वाले में कम होता है. तो लास्ट में बहुत दो जहां बोला सही था. What about this? इसमें क्या होगा? इंक्रीज होता है. सिंपल है ना? दिस इज बेसिकली सॉलिड बिकमिंग गैस. Crazy, simple. What about this? Melting of ice. I know this is very easy, but exam में अगर एक random सवाल आ गया, you should be able to answer it and don't blank out when things like this come. Yeah, should be asked exactly. Melting of ice. What's happening here? यहाँ पे क्या हो रहा है? Yeah, इधर भी increase हो रहा है. Simple, exactly. This is very simple. Okay, thanks for making that quick. So, entropy change में heat का क्या कोई इनपुट है क्या? दैट्स व्हाट वील एक्सप्लोर नाउ. अभी तो फील से, इंट्यूशन से जस्ट डिसऑर्डर बढ़ रहा था, उससे हमने भी फिगर्ड ऑल दिस आउट, राइट? जो ऑर्डर अगर बढ़ रहा था तो वी वुड से एंट्रोपी कम बढ़ रही थी. अगर ऑर्डर कम हो रहा था, वी से एंट्रोपी कम हो रही थी. ठीक है, दैट वाज जस्ट अबाउट द ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ वी गोना टॉक अबाउट हीट. तो अगर मैं हीट ऐड करता हूं, व्हाट डज हीट डू? वेल, आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे कि हीट जब सिस्टम में ऐड होती है, सिस्टम समझते ना, तो it does three things. One is that it increases the motion of the particles. अब ये motion किस टाइप का motion? मतलब आगे पीछे, round and round. There is something called translation motion. मतलब एक आराम से यहां से वहां physically move होता है, translation. फिर vibrational, ठीक है? अब about its own spot itself. Then rotational motion. ये सब possible. Usually translational ही होता है. हायर टेम्परेचर में बाकी होती है. फिजिक्स में पढ़ोगे आप, डोंट वरी, डोंट गेट स्कैर्ड बाय ऑल दिस. ठीक है, तो हीट की वजह से मोशन बढ़ता है, एंड बिकॉज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, रैंडमनेस बढ़ती है. एंड इट कुड आल्सो, आई एम गोना राइट दिस, कुड आल्सो. मैं कुड आल्सो क्यों बोल रहा हूं? देखो, इफ यू लुक एट अ केस वेयर यू हैव अ सॉलिड बिकमिंग अ लिक्विड, है ना, मतलब किस पे से 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस पे. अब यहां पे हीट तो ऐड हो रही है, मतलब सॉलिड पे मैं हीट ऐड कर रहा हूं लिक्विड में जाने के लिए, बट टेम्परेचर नहीं बदल रहा है. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुड इंक्रीज टेम्परेचर, नॉट नेसेसरीली, बिकॉज दैट हीट, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं. द हीट इज गोइंग इनटू quote unquote breaking, yeah, the solid solid interaction and forming liquid liquid interaction, है ना. तो yeah, could increase, not always, but heat could increase temperature. Okay, ठीक है. So अगर मैं इसको अपने एंट्रोपी टर्म्स में बोलूं, तो आई कैन से कि अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो मैं सिस्टम का जो चेंज है, इट इज प्रोपोर्शनल टू हीट एडेड. दिस इज समथिंग आई कैन राइट.
theoretically now we'll do a little bit of derivations, ठीक है? तो theoretically I can write this. Okay, cool. So okay, that's great. तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तब रैंडमनेस ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम है तो रैंडमनेस कम होगी. दिस इज वैलिड. बट हाउ डू आई राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन? देखो, अगर हीट ज्यादा है तो रैंडमनेस ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो रैंडमनेस ज्यादा है. If अगर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होता है, then you know what I'm talking about. टेम्परेचर ज्यादा है then particles move faster. टेम्परेचर कम है तो particles move slowly. ठीक है? How do I write this in the form of an equation यार? Okay. Let's see. Mathematically, let me tell you how we write it, and you see if this makes sense to you or not. अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रैंडमनेस ज्यादा होती है. So I'm going to say कि this is a weird thing. I'm writing something else here. ये तो ठीक है, तो it looks like S should be proportional to T, है ना? This is what this means, right? But I am writing a different equation. मैं लिख रहा हूं कि change, okay, this is important. This is not S proportional to T, sure, maybe, sure, but I'm saying कि change in S is proportional to 1 by T. What on earth is this, bro? That's confusing. What does this mean? इसका मतलब ये होता है, मोटे तौर पे ये होता है, कम टेम्परेचर पे अगर मैं सेम हीट ऐड करूं तो एंट्रोपी ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा टेम्परेचर पे सेम हीट ऐड करूं एंट्रोपी कम बदलेगी. इसीलिए अगर टेम्परेचर ज्यादा तो डीएस कम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम तो डीएस ज्यादा होगा. डू यू फॉलो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैथमेटिकली जो लिखा है हमने, चेंज इन एस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी, मतलब लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट. आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ वन मोर टाइम. एंड एट अ हायर टेम्परेचर, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, दोनों केस में एंट्रोपी कम बढ़ेगी. इफ यू वांट टू सी अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ठीक है, ये जो है हायर टेम्परेचर पे है, दिस इज लोअर टेम्परेचर. यहां पे देखो, दिस टेम्परेचर बार इज इंक्रीजिंग एंड एंट्रोपी देखो, अमाउंट ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज इज लोअर. Physically, you can measure it if you want with some instrument. We can measure all these things. कोई डाउट है तो पूछ लो अभी. This is one thing that could be a little bit tricky. There's another tricky thing coming up. इसलिए एक tricky चीज को मैं एक बार आराम से डील करना चाहता हूँ. Are you okay with what I have said so far? Yes or no? Please let me know. This is important. And if you're not watching this live, well, ठीक है. I'm assuming that you're able to follow this. ठीक है? Cool. This is, and again, last time मैं ये बोलूँगा, I'm adding the same amount of heat. Okay? ये फ्लेम का सेम पे रहने का मतलब कि टेम्परेचर की द हीट एडेड इज सेम, टेम्परेचर नहीं, हीट एडेड इज सेम, एंड दिस स्टार्ट्स एट अ लोअर टेम्परेचर देन दिस. ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर पे एंट्रोपी ज्यादा बढ़ रही है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, हायर टेम्परेचर पे एंट्रोपी कम बढ़ रही है. दिस इज व्हाट दिस मींस. ओके, दिस इज व्हाट दिस मींस. ऑलराइट, स्वीट. So I've got two expressions mathematically speaking. DS system is proportional to Q reversible. Nobody has questioned me on this. But this is a theoretical thing कि it depends on Q reversible irrespective of the process. अब ये जो है second tricky चीज है. पहली tricky चीज मैंने आपको बता दी. This is a second tricky चीज ये है कि yeah, this we'll talk about this. So in words, at higher temperature entropy is already high. Heat added changes entropy by a small amount as compared to lower temperature. ठीक है. So we define delta S is Q reversible by T for all paths. What is a path? Reversible is a path. Irreversible is a path. dP equal to 0 मतलब isobaric. That is a path. ठीक है. वाह, मेरी handwriting बहुत अच्छी है. I know. I'm going to try my best. I think जब मैं धीरे लिखता हूँ it's fine. But the moment I go in my Speedy Gonzalez mode, things become very awesome very, very quickly. Right? This. All of these are different paths. Paths. I'm going to write that down. Path 1. Path 2, path 3, path 4. It doesn't matter what path I take. Delta S का formula will always be Q reversible by T. This is the second tricky thing. And think about it like this. It is a state function. It does not care क्या होता है. Just like when I said that delta U is always Q at V. Now, in that setup, heat may not be at constant volume, but if I push heat through at constant volume, that would be equal to delta U. And this is in parallel. We are drawing parallel things to this. Analogy यही है ना कि यार हर process थोड़ी ना होता है कि heat at constant pressure, but
if I drive heat at constant pressure, that will be equal to delta H. Just like that, delta S is always defined as Q reversible by T. ठीक है? This is important. आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं? आप पढ़ाना चाहते हैं? That's very interesting. Dude, yeah, sure, ping me, I guess. You know where to find me. I teach chem on Telegram and on Discord. आइए. That's interesting. That's a new one. Thank you for reaching out. All right. So, इनमें से कौन से प्रोसेसेस होते हैं जहां पे डिक्रीज इन एंट्रोपी होती है? नाउ आई गिव यू सम विजुअल्स. नाउ हियर इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन दैट विल कम इन योर टेस्ट बिकॉज़ दैट्स अ गोल वी आर ट्राइंग टू ट्रेन यू फॉर टेस्ट, राइट? तो इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज होगी? प्लीज क्विकली बताइए. स्टडी विद डीएस. आप फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं और मैं भी फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकली थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स ही तो होती है. हेल्प मी एंड आंसर दीस क्वेश्चंस. आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ लॉट. प्लीज डू दैट. I was supposed to send that message now on WhatsApp. I forgot. Yeah, to tell people कि ये सब आप लोग भेज रहे हो messages. One moment. Dude, what is the person's name? Here it is. Feedback on class right now on YT. B and C. Let's see. देखते हैं. Oh, the second one is थोड़ा मुश्किल. मैंने ऑप्शन डाल दिया इसमें. एक ऑप्शन काफी मुश्किल है. सी आपने बिल्कुल सही बोला आस्तिक. सी बिल्कुल सही है. ठीक है. Because they are two gases and what you're getting in the end is more ordered. Right. So I agree with you. But what about this? This one is interesting. This one is interesting. This is obviously increase हो रहा है. यहाँ पे भी increase हो रहा है. And let's try and see how this also is increasing. It is, as a statement of fact, it is. So sugar is very ordered. Okay. And there's water, which is liquid. So, in a sense, what I'm doing is I'm disrupting both of them. Sugar though is getting destroyed, right? It's completely like sugar बन जाता है aqueous or whatever, right? Which means कि एक जो sugar का जो तुमको क्यूब दिख रहा है वो इतना छोटा हो जाता है कि वो दिखता ही नहीं है पानी में. तो it completely gets destroyed, so to speak. So उसको तो completely disorder हो रहा है. Now you may argue with me saying कि यार पानी H2O it surrounds, there is some order because कुछ aqueous ions के around surround हो रहा है. I agree, there is some order there, but the overall disorder is more. ठीक है. So take it as a statement of fact for now. There's a way to measure these things. That before things are dissolved and after things are dissolved, after you dissolve them, order कम हो जाता है, यानी कि disorder बढ़ जाता है. So there's an increase in entropy here. Yeah. Answer is C, Shubhi and Astik. ठीक है. B में increase होगा, not decrease. Okay. I've given you a bit of a thing, and this is a difficult thing to understand. This is a difficult thing to understand in terms of abstract है थोड़ा, है ना? It's easy to understand कि sugar disorder बढ़ रहा है क्योंकि sugar बहुत ordered था और वो टूट गया. But after that, if you think कि पानी के कुछ molecules surround this sugar, it's a little bit difficult है कि ये order versus that order कितना compare करेंगे. So take it as a statement of fact right now. It is always disorder बढ़ जाता है. ठीक है? Let's move on. All right. Hi Khushi, how you doing? How about this one? इनमें से किस में delta S naught is greater than 0? Delta S naught is greater than 0. ये कैसे निकाले भाई? अभी हमने निकाला था कि delta S is Q by T. I can't do with that equation. I think we can just do that simple equation just with our expression. इसको try करो. Try this out. Khushi, do you want to try this question out? What about everybody else? Can you guys also try this out, please? What's happening here? Simple idea ये है कि if I take the state of matter, so to speak, gaseous state सबसे ज्यादा disorder है, aqueous यानी कि dissolved state है, that is somewhere in the middle between liquid and gas. ठीक है. In fact, ये aqueous being really far apart, this is what we'll use equilibrium वाले chapter में. हम लोग जो बताएंगे कि aqueous is like, अगर मैं किसी को पानी में dissolve करूं, it is almost like the particles are so far apart कि individually they don't interact with one another. मतलब कि they almost like gas particles. ठीक है. इसीलिए ये aqueous state is in between both of these. Okay. With that information, how do we figure this out? तो हमको सबका डेल्टा एस निकालना है. डेल्टा एस किस चीज पे डिपेंड करेगा? डेल्टा एन जी पे डिपेंड करेगा. तो डेल्टा एन जी लेट्स फाइंड आउट फॉर ऑल ऑफ दीज स्पीशीज. ओके. पहले गैसेस देखेंगे, उसके बाद बाकी देखेंगे. लेट्स लुक एट गैसेस फर्स्ट बिकॉज दैट्स द मोस्ट ऑब्वियस थिंग. ओके. इसका डेल्टा एन जी -1 है क्योंकि गैस है यहाँ पे एलएचएस में. दैट इज सिंपल.
व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, अगला क्या होगा? ठीक है, तो इसका दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 0. व्हाट अबाउट दिस लास्ट वन? इज आल्सो सिंपल बिकॉज़ डेल्टा एन इज -2. यू गॉट 2 हियर, यू गॉट 4 हियर, सो 2 - 4 इज -2. ऑसम. अब बचे ये दोनों लोग जहां पे गैसेस है ही नहीं, देयर आर नो गैसेस, सो देन व्हाट यू डू? वेल, वी कैन कंपेयर aqueous solutions and solids. That's what we're going to do. Clearly यहां पे डिक्रीज हो रहा है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है. It's very obvious, but ठीक है, we can do it one by one also. यहां पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट लास्ट क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है, सो पानी में डालने के बाद एंट्रोपी इंक्रीजेस. दैट्स इट. सी इज द आंसर टू दिस वन. Yeah, so दोनों questions they were quite related. I'm going to ask you one more. This is related to that itself. I don't think this requires more of an explanation. कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना as always. Okay, how about this? 3 moles of an ideal gas expanded simultaneously into vacuum. What? This has nothing to do with entropy, does it? Kind of. I can say entropy increase हो रहा है क्योंकि expand हो रही gas. Yeah, if gas expands, entropy बढ़ रही है. सोचो क्यों? But into vacuum, what is the work done? What? How do we do this? इसको क्या करें? Astik, Khushi, Shubhi, anybody else who's also here? Shubhi, are you still in school or have you gone to college right now? Not Shubhi, sorry, Khushi. I think used to be Khushi used to attend NEET classes last year, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. Yes, Astik has caught this one. It is 0. Why is it 0? Because work done is minus P delta V. Delta V तो कुछ होगा, it's a positive value, but this is 0. It doesn't matter. Okay. So work done is going to be 0. Interestingly, work done 0 है, Q है 0, and delta U also is 0. But it's that's how this process works. I may have taught you this in another class, पिछले class में. Okay, how about this one? The direct conversion of A to B is difficult. So हम लोग उसको carry out करते हैं इस path में. पहले A से C जाते हैं, फिर C से D और D से B. ठीक है? And I've given you the entropy of the 3 processes. ठीक है, A to C, C to D and B to D. B to D, अच्छा D to B नहीं, B to D. ध्यान से देखो, B to D दिया है, not D to B. Okay. What is the entropy change of A to B? The only trick in this question, or the only thing to be careful about, is कि इसको देखना है. And the simple thing is, look, delta S is a state function. मतलब कि it doesn't matter if I make this happen in 1 step or 10 steps. The total entropy change will just be summation of all the steps. Yeah, Shubhi, you're right. 100, 60, Ram, gamer साहब, आप भी बताइए. Okay, I have 2 people giving me plus 60. Ram figured out what his error was. Good job. सही है. How do we get 60? Well, let's see. देखते हैं. ये बहुत clear है कि let's mark them as 1, 2 and 3. But ये जो 3 है, here I need to go from B to D. I mean, this is given, right? I need to go from D to B. It's given B to D मुझे दिया है. तो मुझको इसको रिवर्स करना पड़ेगा. अगर मैं इसको रिवर्स करूं, then this becomes -20. ठीक है? Or I can just do 1 + 2 -3. Either way it works. जैसा भी आप करना चाहो. So that's 50, 30, 80, -60, -20, which is +60. All right, awesome. Good job. Next. जितनी जल्दी आप लोग करोगे, इतनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे. Calculate the entropy change in surroundings. Wow, wait a minute. Entropy change in surrounding, that excites me. When 1 mole of water is formed under standard conditions at 298 Kelvin, जब delta H reaction दिया हुआ है. What? How do we do this? Entropy, delta H. Have I taught you this already? सोचना पड़ेगा भाई. Can we do this? इसको कर भी सकते हैं. Oh, I have given you one formula, have I not? मुश्किल सवाल होगा क्या? Yeah, good job anime. बिल्कुल सही. आस्तिक, गेमर साहब, राम, absolutely, बिल्कुल सही. Shubhi, do you want to try this one out? Okay, but ये था delta S system. How do I get delta S surrounding? Or do you remember this? अगर reversible process है तो maybe I have not told this to you explicitly, but let me let you in on a bit of a secret. Delta S universe, you know this already, is delta S system plus delta S surrounding. ये तो आप जानते ही हैं, right? Now, अगर ये ऐसा एक प्रोसेस है जो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब कि पानी इज गोइंग फ्रॉम फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, इसको ये बन रहा है. ठीक है. सो हाउ डू यू स्टार्ट? राम डजंट वांट
take any prisoners, huh? See the answer. ठीक है. Since Ram has given us the answer, we're just going to go ahead and look at the solution from one by another. The goal is, yeah, just to keep things simple without, ठीक है, वो सब छोड़ दो, वो सब equation छोड़ दो. Basic idea ये है कि how am I forming this? This is delta H is negative. मतलब कि this is releasing that heat. Where is that heat being released to? अगर system release कर रहा heat कहाँ जाएगा? In one of my earlier sessions मैंने बताया था कि consider water molecules or consider molecules that are taking part in a reaction to be the system. So everything that's not the system is the surrounding. So अगर कोई reaction heat produce कर रहा है, then that heat is being absorbed by the surrounding. So for the surrounding, अब system के point of view से heat बाहर जा रही है, surrounding के point of view से heat अंदर आ रही है. Oh, so plus Q. अच्छा, yeah, that is exactly what happens. So surrounding के point of view से heat उसके अंदर आ रही है. So the value is going to be positive. Okay. Heat flows from system to surrounding. How much heat? 286 kilojoule per mole. From system to surrounding. Is this step okay? This is important. Is this step okay? Yeah. Delta H of reaction is this. Delta S system was Q reversible by T. Delta S surrounding उसका negative हो जाएगा, बस खत्म. That's all. That's all. Yeah, Shubhi, thank you for that. Ram, absolutely. I mean, we can solve this out, right? You get minus or minus 286 or 298. Only thing that makes sense is this, which is plus this value. Good job, you guys, for figuring it out. That's awesome. That's awesome. Slightly tougher question, yeah. From doing everything you've done, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा मुश्किल. इसी चीज से let's move on to the next side जो है जिसकी मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, डेल्टा आई सिस्टम सराउंडिंग वो सब चीजें. अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, this is an equilibrium process. मतलब कि लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, इट कुड हैपन ईदर वे डिपेंडिंग ऑन हीट किस डायरेक्शन में जाए. अगर मैं हीट दूं तो लिक्विड से गैस बन जाएगा, अगर मैं हीट निकालूं तो गैस से वापस लिक्विड बन जाएगा एट बॉइलिंग पॉइंट. सो फेज जो चेंज होता है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. लेट्स टेक वन बार फॉर ऑल ऑफ आवर ट्रबल्स. देन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी रिवर्सिबल. इक्विलिब्रियम मैंने शब्द ब्रॉडली बोल दिया. लेट्स यूज द वर्ड रिवर्सिबल फॉर नाउ. अगर ये आता है, इफ दिस हैपेंस विद द ट्रांजिशन टेम्परेचर जो मैं आपको बताया था, लाइक 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वी विल कॉल इट QP is delta H. खत्म. Okay, awesome. So delta H system now is going to be Q reversible by T, but that Q reversible is the same as delta H of, ये क्या हो रहा है? This is fusion. हाँ, delta H fusion by T. So I can write delta S of fusion is delta H fusion by T. What is this? This is melting point. Freezing point भी बोल सकते हो, same ही चीज है. ठीक है? This is the melting point of the substance. So similarly, I can draw two more conclusions from this. ये हो गया melting point वाला. Fusion के लिए, vaporization के लिए, same ही चीज दिखी है. I've just changed from fusion to vaporization, B to boiling point. ठीक है? That's it. And also, I can also define this for sublimation. ठीक है, sublimation में भी हम लोग कर सकते हैं. But sublimation is a little more complicated in terms of temperature. Figure out which temperature sublimation हो रहा है, and you can say that. ठीक है. कुछ substances सीधे solid से liquid बन जाते, सीधे solid से gas बन जाते हैं. तो you will notice कि यहाँ फिर से boiling point लिखा है, but this is for substances that go from solid to liquid directly. To gas directly. I know यहाँ लिखा है boiling point, but focus on this. Okay, this is like dry ice, carbon dioxide, और क्या होता है, camphor, etc., etc. Okay, quick question. Enthalpy of fusion कुछ value दी हुई है. What is the molar entropy change for the melting of ice at 0 degree Celsius? है? Undefined 1435 by 0. You know what to do, don't you? Please convert it to Kelvin. In all scientific calculations, temperature has to be in Kelvin. This is 273. That's literally all you've got to do. But अच्छा, ये करने के बाद तो मुझे बहुत छोटा नंबर आ रहा है यार. That small number is not there anywhere over here. If I do this weird thing, 1.435 273, what do I get? I get 0.00. एक और जीरो आएगा क्या? 0.05 something. But ये किलो कैलोरी है ना, तो into 1000 हो जाएगा. So the answer should be this. मेरे हिसाब से C होना चाहिए. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बताइए. Maybe I did this a little quickly this question, but that's how quickly you got to actually do it in the test. ठीक है. No
what the question asking for, immediately apply. What is the question asking for? Enthalpy of fusion of water दिया हुआ है, molar entropy change. So you have to recognize step number 1. You have to recognize is a phase change. Phase change reaction है तो delta, if Q reversible by T is the same as delta H by T. Delta H is 1435 किलो कैलोरी को कैलोरी में कर दिया by 273. आंसर हो गया C. That's it. Yeah, absolutely. Astik, Shubhi, good job, both of you folks. This is the part that I told you would drag this session on for a little long. Do you want to do this or not? Like, this is definitely above, like, definitely not for JEE main or NEET. I'm saying this explicitly because not in NCERT. Yeah, I'm writing this down. So if anybody wants to forward this section, be my guest. Please forward kar lo. Next 5 odd minutes, you can forward if you don't want to do things that are not in NCERT. ठीक है? Cool. With that, what's the word for it? Disclaimer. I'm going to continue because I like thermo. I'm going to teach you anyway. Let's talk about enthalpy change for an ideal gas. And this will explain जो हम लोगों ने qualitatively देखा था शुरुआत में कि how is it that entropy change happens when there is no heat exchange? How? This will explain that. और मैंने एक और चीज बोली थी ना कि यार अगर कोई गैस एक्सपैंड होती है तो उसका एंट्रोपी बढ़ जाती है. How did I say that? We'll figure it out in maths. देख ले आज तक मजा आएगा. नहीं, मैं बोल रहा हूं देखना तो कोई भी देख सकता है, देखने में कोई कमी नहीं है. इट इज जस्ट दैट एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है. अगर आप नीट या जेई मेन कर रहे हो तो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. देखने को तो कोई भी देखे यार, 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी देख सकता है, नो प्रॉब्लम. या बट डिस्क्लेमर दे दिया मैंने बिकॉज आई डोंट वांट टू डू यू डिसर्विस बाय टीचिंग यू रैंडम थिंग्स एंड मेकिंग यू मग थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर द एग्जाम. तो अगर मन नहीं है पढ़ने का छोड़ दो, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज वॉच. सो डेल्टा सिस्टम वाज डिफाइंड एज dq reversible by t. So I can just take it to the other side. Say TDS, system is dq reversible. Okay, cool. Now this is where the fun begins. First law of thermo. I'm going to use that to substitute. What is the first law of thermo? du is dq plus dw. Okay, we can say that. So TDS now is going to be equal to, substitute कर लो यार, डाल देते हैं. Because Q is a little bit difficult to calculate, but these are very calculatable. I know calculatable is not a word, but we will calculate. कैसे करेंगे calculate? I know that this is the same as QB. I know that this is integral of P dV. Okay. Or rather negative integral of P dV. So when I substitute that, I get this beautiful differential equation. Don't worry, I'm not going to scare you. इसको differential equation बोलते हैं. And this is a partial differential equation because you've got multiple variables. It's a little weird. You've got dt, you've got dv, you've got ds. What on earth is happening? But the good thing, see, this is a partial differential equation which could get scary. But the good thing is that this does not depend on v. And this does not depend on T. Well, it kind of does, but we'll address that. We'll address that. ठीक है. Mazur, I have no idea, bro. You guys are having fun in the chat. All right, just all's fine as long as you know keep things study related. So I can put this P gas as P external, and irrespective of whether the process is reversible or not, this is the part where I told you, right? For me to calculate delta system, I will use reversible heat. And this is where sometimes students are like, bro, what are you talking about? And remember, since delta H was QP, delta U was QV, so why can't we define this? This also works. ठीक है? मतलब कि process reversible हुआ irreversible doesn't matter, but ds is always defined by dq reversible by t. Okay, now बाकी कुछ नहीं बकाया. Now it's like child's play. You just have to integrate. Be careful. Temperature को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, right? You will see. मैंने बोला था it's not dependent on t. Now you see. इस temperature को दूसरी तरफ ले गया. Voila. Not dependent on t. And this is not
dependent on V. Why? Because ये तो है ना CP, sorry, constant volume का ही लिखा है. So although I have partial differential equations, जो differentials हैं dt and dv, they can be separated. तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं. अगर किसी को मैथ्स पसंद है, they will appreciate this. ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं. I've already told you this is not relevant for JEE main, not relevant for NEET. But just to understand कि यार एंट्रोपी कैसे बढ़ती है, वो just by expansion of gases or just by mixing of gases, कैसे? This is what we're trying to understand in this. And you can already see that this term is not dependent on T, dependent on V, right? This is the term that will tell you कि mixing of two gases की वजह से क्यों एंट्रोपी बढ़ती है. Yeah, this is the term that will tell you. Okay, integrate करो, उसमें क्या है, बड़ी बात नहीं है. dt by t will become ln t, dv by t will become ln v. खत्म, nothing else to do here. Sure, put v1 v2 t1 t2 डाल दो यार, that's it. ठीक है, this is the integration for this, and what you get finally is this expression. Now this is derived for a reversible process, but is also valid for irreversible process क्योंकि s is a state function. Okay, so for any process, this is how I define delta S of system, not surrounding of system. Surrounding का थोड़ा अलग है. I can tell you about surrounding as well. Let me know if you want to know that. I'll tell you very shortly. Let me just get over this. I'll talk about surrounding as well. Now इसमें से हम लोग थोड़ा सा manipulation कर सकते हैं in a positive way, not manipulation in a negative way. Manipulation of math, guys, come on, don't be so politically correct. Manipulation in terms of math. So I'm going to put this as P1 V1 equals to P2 V2. I can do that, right? क्यों? क्योंकि this term is not dependent on T, which means कि T is constant. I can do that. I can do that. Or if I don't want to do that, I think a more relevant thing to do would be to do everything, right? It would make sense to P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2. This is a more relevant thing. जो मैंने पहले लिखा था ना, it doesn't work, right? I know this is not dependent on T, but that doesn't mean you take T as constant. That's not what's happening because obviously T is changing, right? T changing is accounted for over here. So यहाँ पे भी T changing हम लोग count करेंगे, but you'll see it'll give you a beautiful result. Okay, let's substitute. करते हैं. Let's talk less and do more. Okay, let's substitute. ये हमने यहाँ पे लिख लिया. Let's substitute over here. V2 by V1 is equal to P1 T2 by T1. When you substitute all of that, you get a very, very interesting result. You get the same thing plus this, right? Plus this. So I can combine the T1 by T2 or T2 by T1 terms, combine both of them and add them together and you get another awesome result. You know what's happening over here? R plus CV equal to CP. If you don't recognize that, I'm sure you recognize CP minus CV equal to R. है ना? Look at that. So I've got two results of delta S system, one in terms of V1, V2 and the other one in terms of P1 and P2. This is the entire derivation for this and the general idea was CV minus CV was equal to R. So I can just put this down to be this. Okay. So I've got one relationship. अगर मैं इसको P1 और P2 के बारे में बात करूंगा, then I have to use CP. Okay. This is easy actually to remember. क्योंकि remember ये दोनों वेरिएबल सेपरेटेड है. तो अगर मैं प्रेशर की बात करूंगा, then what I need to have on the other side will be constant pressure वाला term, hence CP. If I talk about volume, which is NR ln V1 by V2, in fact I do not V1 V2 is V2 by V1, then मेरा था यहाँ पे CV by. This is an easy way to remember it. ठीक है, तो इसीलिए चीजें अगर inside out करोगे तो मजा आएगा, which is this right here. So I get two expressions. This is the first expression. Actually, technically this is the second expression. The first expression was right here. जो मैंने से पहले derive किया था. कहाँ गया वो? Where is that awesome expression? This one right here. This was expression number 2. Well, technically expression number 1. You see, यहाँ पे V2 by V1 आया and we've derived it in detail and as to how we got P1 by P2. ये मग करने वाली चीज नहीं है दोस्तों. And this was the extra part that I told you that would stretch this session to a little bit longer than usual. ठीक है? Now we'll get back. This was the part that was not in your syllabus. ठीक है? I'm going to quickly close this, and this is also what made my presentation very heavy, increased it by like some 30 slides. So I'm going to open the other presentation that I have for you. Will take maybe 15-20 minutes more. मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होगा, maybe सवा घंटे का होगा session. Hold on, yeah, hold on to your horses. ठीक है? That was it about spontaneity. अब हम लोग बात करेंगे Gibbs free energy के बारे में. मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? Second law of thermodynamics.
दिस इज व्हाट वी गोना टॉक अबाउट नेक्स्ट, ठीक है। Oh, and by the way, if you want to talk about how on earth was it कि expansion के केस में entropy बढ़ रही थी, I'm going to quickly write that expression down. Delta S is N CV ln T2 by T1 plus N R ln V2 by V1. तो अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो this becomes 0 because ln1 is 0. फिर भी if V2 is greater than V1, then delta S is greater than 0. So you see, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स दिए थे वो गैस मिक्सिंग में, हाउ डज दिस वर्क फॉर गैस मिक्सिंग? गैस मिक्सिंग में इनिशियली उसका वॉल्यूम आधा था, फिर वॉल्यूम डबल हो गया, है ना, एक गैस का। सिमिलरली दूसरी गैस का भी यही हो गया। सो यू कैन डिराइव दिस फॉर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है। टेक दैट एज एन एक्सरसाइज फॉर योरसेल्फ, इट्स नॉट योर सिलेबस, आई वोंट टॉक अबाउट इट, बट यू कैन ट्राई दैट आउट। दूसरी चीज क्या है, अगर जनरली थोड़ा सी गैस कम स्पेस से ज्यादा स्पेस लेती है तब V2 is also greater than V1, hence entropy बढ़ेगी। Awesome, right? So as I told you, it would work. Asik, I know you said कि आप नीट की पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा ज्यादा हो गया, but I hope this made sense to you. ये डेरिवेशन इसलिए किया हमने to prove to you कि hey, entropy increases on just changing volume, अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो, और entropy increase अगर प्रेशर भी कम हो जाता है तो, even when temperature changes 0. Okay, let's talk about second law of thermodynamics. अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ जाता है। ये साउंड्स टू फिलोसॉफिकल, राइट? वी विल डू सम मैथ्स अराउंड इट। लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ब्रो? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स? या श्योर, व्हाई नॉट? सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स। अभी तक हम लोग यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे थे, एंड दिस इज नॉट वो आकाश गंगा, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट यूनिवर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकली एक्चुअली काइंड ऑफ आर, who knows what happens actually outside the actual universe. But back to the point, delta S universe is system plus surrounding, और हम लोग बोल रहे हैं अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है then this is always greater than 0. ठीक है? What is its implication? इसका implication सबसे बड़ा ये है कि ठीक है, spontaneous is great, but if it is a reversible process, मतलब कि पलरा किसी का भी भारी हो उसमें उस डायरेक्शन में चला जाएगा. If it's a reversible process, then the entropy change of universe is 0, which means that delta S system, in fact actually this is the better way of writing it, system plus delta S surrounding is going to be equal to 0, and hence it becomes negative. Now how do I calculate these values? को हम लोग calculate कैसे करें? Oh, you know how to calculate this. देखो, delta S system, you know that बड़ा सा भी फॉर्मूला तो देखा हम लोगों ने, NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1 और NCP ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2. I haven't mugged it, I just remembered it because we just derived, right? I'm really bad at mugging stuff. If you've been following my sessions, you'll know that. But we just derived it, so I remember it. Okay, cool. These are two ways of getting this. But how do I get this? इसको कैसे निकालें? देखो, इसमें क्या है कि इसमें जो भी हीट इस सिस्टम की आई, right? That's negative of surrounding, right? क्योंकि अगर हीट आ रही है जा रही है, उल्टा होगा, यहां से आ रही है वहां जाएगी और कहां होगा? सिस्टम सराउंडिंग खत्म. Also, this has a constant temperature क्योंकि सराउंडिंग नॉर्मली बहुत वास्ट मानी जाती है. Usually, right? And you say the surrounding is at a constant temperature, उसका temperature नहीं बदलता है. This is how you address questions when you come to surrounding. All of this is for JEE Advanced. JEE Main और NEET पे नहीं पूछा जाएगा. ठीक है. But JEE Main में NEET की क्या बात करेंगे? We'll get back to. Now we're getting back to JEE Main and NEET. Now we are back to that. ठीक है? तो if by any chance आप switch off कर गए थे पिछले 15-20 मिनट के लिए, when I was said कि oh this is not for JEE Main and NEET, प्लीज स्विच ऑन कर लीजिए. ठीक है. सो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी तब उसकी होती है, एंड ऑल्सो डेल्टा एस इज इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब है? अगर आई वुड प्लॉट अ ग्राफ, दिस व्हाट दिस मींस. ठीक है? अगर सम हाइपोथेटिकल ग्राफ, अभी इस ग्राफ का मतलब अभी मत पूछो, बाद में बताऊंगा. ठीक है? इफ आई वर टू प्लॉट समथिंग कॉल्ड, इस ग्राफ का मतलब बाद में बताऊंगा. ठीक है? बट if I were to plot this versus say reaction progress, ठीक है, this is what we are talking about. Entropy of an isolated system, maximum system at equilibrium. इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं equilibrium, and at this point delta is 0, and you know this differentiate करो 0 हो जाएगा, and second differentiate will be negative maxima. वही चीज है, same mathematical treatment for advanced. Okay, so एक entropy को अगर मैं thermodynamic parameter यूज करूं तो स्पॉन्टेनिटी का क्या क्राइटेरिया है? जस्ट मेक श्योर इफ यू गाइस आर अवेक.
You studied it last year, okay, it's new for you, all right, don't worry about it. But it's all related, इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ than what you need for JEE and NEET, but I think it's all related, इसलिए इतना बड़ा cognitive load नहीं होगा. अगर हो रहा है तो go back and read it एक बार, it'll be all right. What is this is relevant. This is relevant for JEE and NEET. Spontaneity का क्या criteria है? 4 ऑप्शन दिए. Please let me know. Please let me know. जरूरी है ये वाला पार्ट. So you may want to say, if you didn't hear the last 2 minutes, then you may say C is the answer. But the actual answer is this, right? It's delta S of universe that is greater than 0. इसीलिए, using this, you can say that freezing of ice at temperature less than 0 is spontaneous. अगर आप सिर्फ डेल्टा एस की बात करोगे इस केस में डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव. थोड़ा सोचो इसके बारे में. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, बट दिस इज अनदर थिंग फॉर यू टू डू फॉर एडवांस इफ यू आर प्रिपेयरिंग. फाइंड द क्वेश्चन, यू फाइंड द क्वेश्चन इजीली. फ्रीजिंग ऑफ आइस एट अ टेम्परेचर, प्रूव दैट फ्रीजिंग ऑफ आइस एट अ टेम्परेचर लेस देन 0 इज स्पॉन्टेनियस. कैसे प्रूव करोगे ये देखो. बिकॉज इफ यू टेक डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, वो तो नेगेटिव आएगा. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है. या सॉलिड था भाई साहब, बन गया गैस, सॉरी लिक्विड था बन गया सॉलिड, तो डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव, बट डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हीट जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, बट चेक इट आउट. ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल इट, एन एक्सरसाइज लेफ्ट टू द यूजर. ठीक है, कूल. With that, I'm going to introduce something called the Gibbs free energy. All right, good job. Atharva, if it's relevant to what we're talking about, यहाँ पूछिए. If it's not relevant to what we are talking about, Atharva, go to my Discord channel, go to Telegram channel, वहाँ पूछिए. Links are description में भी है, यहाँ pinned comment भी है. Ask any doubt you like. Academic, obviously. Physics, chemistry, maths, bio, coding, सब लोग हैं वहाँ पे. Students हैं, कुछ teachers हैं. People will help you out. Discord पे, Telegram पे. Discord more active, that has around 750 people. Telegram में around 100-150 लोग हैं. So check it out. We're going to define this thing called Gibbs free energy. Gibbs free energy क्या होता है? It tells you how much useful work can be extracted from a system. Now, what on earth is this useful work? We'll talk about that. ठीक है. And also, it predicts the spontaneity of a reaction. Spontaneity तो अभी S थी, अभी इसको predict करने की क्या जरूरत है? Talk about that. इसकी value, Gibbs free energy is another energy term. So kilojoule per mole, joule per mole, it's a state function, extensive property, just like S and U and all these other parameters. ठीक है. Extensive मतलब number of particles ज्यादा हुए तो इसकी value ज्यादा होगी. Okay. So, for a spontaneous process, this term was there, which you guys have all figured out. Now, अगर system surrounding से thermal equilibrium में है, thermal equilibrium मतलब temperature same है ना, thermal equilibrium में है, zeroth law of thermodynamics of A is in equilibrium B, B is in equilibrium C, and C is in equilibrium A. मतलब सबका temperature same है ना, that's what we are saying. So, अगर thermal equilibrium में है, तो temperature of system is equal to temperature of surrounding, which is some temperature, कुछ temperature. So, I can say, मैंने बोला था ना, अगर heat system से जा रही है, कहाँ जा रही है? Surrounding में जाएगी. So, यहाँ से heat जा रही है, वहाँ जाएगी. So, total heat is 0, but delta H surrounding is equal to minus delta H of system. यही मैंने पहले लिखा था, I'm just writing it down here once again. So, then, I can talk about delta S of surrounding now in terms of Q surrounding by T, which is delta H surrounding by T, which is minus delta H system by T. ज़्यादा हो गया? Anything that you don't understand, please stop and ask me. But the notes are going to be given to you. तो आपको लिखने की जरूरत नहीं. Just try and follow the derivation. So now I can say that delta S surrounding is going to be this value, right? Minus delta S system by T. So delta S universe is delta S system plus delta S surrounding. वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है. Ta-da! So if I take T to the other side, I get this sort of a thing. So in a way, these are all system properties. Okay. And I have related a system property to a universal property. Right? Because delta is universe. But ये delta is universe में लाऊं कहाँ से? How do I measure this? Well, this is a little bit hard to do. But I can measure T times delta S, and that is what we are defining as Gibbs free energy or
डेल्टा जी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये पूरा सेटअप इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। व्हाई डिड आई पुट नेगेटिव दिस? बिकॉज अगर मैं इस तरफ से लिखूं तो देन यू गेट दैट डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन 0 एंड दिस इज द स्टेट फंक्शन दैट वी आर डिफाइनिंग। ओके, G हम लोग लिख रहे हैं as H minus TS. This is similar to what we did with H. We told that H was defined as U plus PV. Then we said that delta H is delta U plus P delta V plus V delta P. Then we said that this is going to be equal to 0 when P is equal to some constant value, right? That's what we're doing here. So in this case, हम लोग यही कर रहे हैं. We will say कि इसको भी अगर expand करोगे तो T delta S और plus S delta T मिलेगा. But we will say that it's happening at a constant temperature, right? अगर constant temperature पे that reduces to this function right here. This is defined as delta. This is defined as Gibbs energy. Now going back to what we were talking about, ये है system की property. These are both system properties. This is the universal property, right? Because T delta S universe negative is going to be equal to delta G. So we have managed to define a universal property with a system की property. अब this looks like हम लोग बहुत ज़्यादा maths randomly कर रहे हैं. How do we actually apply this? Let's see. इसको actually apply कैसे करते हैं? So there are two ways to look at this, right? Delta G अगर ये greater than 0 है तो non-spontaneous हो जाएगा, less than 0 spontaneous. इसका क्या मतलब हुआ? देखो यार, I have just written down two different expressions, right? If you go all the way back, let's go back. यहाँ में हम लोग लिख रहे थे, right? Let's go back. Here. T delta S universe was defined as T delta S system minus H delta S, right? For a spontaneous process, universe delta S is going to be greater than 0. And यहाँ पे ही I am saying that why don't we just call this whole thing times P with a negative sign to be equal to delta G. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत awesome physicists and chemists figure this out, and that's what we are doing. So with that definition, it turns out कि a negative value of delta G makes it spontaneous, positive value of delta G makes it non-spontaneous. ठीक है, ज्यादा हो गया? I know it's a little theoretical. So let's put some numbers to it. Delta G is delta H minus T delta S. What? This guy is trolling me, right? This guy randomly saying option A. There's no question, man. What are you talking about? Or is he looking at a question that came long back? Anyway, so if I define delta H as delta H minus T delta S, can we figure out the spontaneity criteria? देखो, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं, मतलब कि नेगेटिव है, मतलब इसका मतलब व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस? दिस मींस इज एक्सोथर्मिक. दिस मींस कि यहां पे डेल्टा Ng इज लेस देन 0 और मतलब एक्वस सॉलिड है जो भी है, बट ओवरऑल क्या हो रहा है कि एंट्रोपी और डेल्टा S इज डिक्रीजिंग. तो नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं? नाउ वी आर कंबाइनिंग डेल्टा S के आइडियाज एंड डेल्टा H के आइडियाज टू गिव यू द फुल पिक्चर ऑफ स्पॉन्टेनिटी. यही हम लोग यहां कर रहे हैं. तो अगर ये नेगेटिव है तो मतलब दिस टर्म इज नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो मतलब दिस टर्म इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ओके, सो एट लो टेम्परेचर्स दिस कुड बी स्पॉन्टेनियस. ओके, नाउ दिस इज व्हाट इज रेलेवेंट टू यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और दिस ऑर्डर कम हो रहा है, यानी कि डेल्टा एस इज डिक्रीजिंग, राइट? दैट्स व्हाट मीन बाय डिसऑर्डर कम हो रहा है. देन दिस एंटायर टर्म टर्म्स आउट टू बी पॉजिटिव, दिस टर्म इज नेगेटिव. सो अगर मैं स्पॉन्टेनियस करना चाहूं मतलब डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, राइट? फॉर दैट डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर द मॉड्यूलस द वैल्यू देन टी डेल्टा एस. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि लो टेंपरेचर में स्पॉन्टेनियस होगा. प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस. दिस इज इंपॉर्टेंट. इज दिस ओके? We'll do 3-4 other cases. They are very obvious. This is the first case which is maybe a little bit weird. पहली बार इसको कर रहे हैं. Is this okay? Shubhi, Gamer साहब, अथर्व, आस्तिक, anybody else who's also watching this live? Anime क्या हुआ? मजा आ रहा है? Okay, good, अच्छी बात है, मजा आ रहा है. Are you able to figure this out? Sweet. All right. So now, what if ये positive हो गया? मतलब कि disorder increases and it's an exothermic process. Badhiya. This means that this term is negative and this term is also negative. Matlab delta G is always going to be spontaneous. Khatam? Easy? Awesome. Another one. This is never going to be spontaneous because ये disorder यहाँ पे हो रहा है कम. And this is an endothermic process now, which means that this is positive. Negative बन जाता है positive. मतलब delta G is always positive, so it's never going to be spontaneous. Lastly,
यू हैव दोनों, दिस इज एंडोथर्मिक एंड ये हो रहा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दूं सो दैट टी डेल्टा एस टर्म इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, तब होगा ये स्पॉन्टेनियस। तब कब होगा? जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। खत्म। टू गिव यू सम आइडियाज ऑफ डेल्टा एस का ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ डेल्टा एस इज अ फ्यू जूल per mole Kelvin, like like say 5 to 10, usually that's the value, whereas delta H as you know is in hundreds of kilojoule per mole, है ना? तो इसीलिए बहुत high temperature 273 high है, but you need to go to like 700 800 900 Kelvin or higher usually to make this spontaneous, और ये होगा useful कब? This is useful in metallurgy, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर आप JEE एडवांस कर रहे हैं तो प्लीज मेरे मेटलर्जी के सेशंस देखिए, दे आर ऑन द बेंटो लिंक, वहां जाके देख सकते हैं, दिस इज रेलेवेंट ओवर देयर। बट अगर JEE मेन और नीट कर रहे हैं तो भूल जाइए, क्या फर्क पड़ता है। बट अगर आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग लेने वाले हैं देन दिस इज रेलेवेंट टू यू। लिटिल बिट ऑफ दिस, लिटिल बिट ऑफ दैट। ओके, ठीक है। अब इस डेल्टा जी का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? मैंने शुरुआत में बोला था अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क दैट आई कैन डू आउट ऑफ इट। यूजफुल वर्क का क्या मतलब है? वेल, नॉट पीवी वर्क। नॉट पीवी वर्क का मतलब क्या है? एवरीथिंग एल्स। इलेक्ट्रिकल वर्क, हम लोग पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी के बेसिस पे करेंगे। सो इन फैक्ट यू डू डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा जी नॉट, नॉट क्या छोड़ दो, बताऊंगा, नॉट बाद में बताऊंगा। नॉट तो एक्चुअली नॉट इज फाइन, नो, 1 बार and at some temperature, right? So 1 bar is not, just like delta H naught and all that. Ye is volts and all of that. We'll do that later in electrochemistry, but this just to tell you कि delta G को आप directly mathematically equate कर सकते हो to non-PV work. So the amount of work you can extract from it, देखो किसी चीज को जलाओगे, if you combust it, it is limited by delta H. The amount of heat released is delta H. But here, it's delta H minus T delta S. So you can extract more work if you do it this way. Most of the time you can extract more work. Hence it is called as useful work. ठीक है? Electrical work is the best example for this. This is the meaning of the physical interpretation of this. ठीक है? और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको उतना वर्क करना पड़ेगा for that process to become spontaneous. That's the other way, right? अगर नेगेटिव वैल्यू है, this what you can extract work out of it. और नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू तो अब you can do this, you can relate this to positive and negative value of regular work. अगर नेगेटिव वर्क है मतलब एक्सपैंड हो रही है गैस आराम से, राइट? एक्सपेंशन से आप वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कंप्रेशन में यू हैव टू पुश, यू हैव टू डू वर्क, एंड उन दोनों का मिलन कहां पे हो रहा था? एट द रिवर्सिबल स्टेज। अगर रिवर्सिबल नहीं है देन ऑल द वर्क दैट यू डू, कंप्रेशन वर्क इज मोर देन व्हाट रिक्वायर्ड एंड एक्सपेंशन वर्क इज लोअर देन व्हाट यू कैन एक्सट्रैक्ट। रिवर्सिबल है तो बेस्ट है। सिमिलरली दिस आल्सो विल बी द बेस्ट व्हेन इट्स रिवर्सिबल। ओके, कूल। यहां पे आई एम गोइंग टू बी डिफाइनिंग दिस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू। 1 बार पे होता है स्टैंडर्ड, just like delta H naught is standard enthalpy and delta S naught is standard entropy of the system. And delta H naught you talk in terms of chemical reactions. अगर non chemical process है तब तुम लोग कुछ और भी चीजें कर सकते हो। Interestingly, and I've told you this already, कि crystals जो होते हैं they have zero entropy. Everything else has some entropy in life. And zero entropy at what? At 0 Kelvin. मतलब कि सब चीज हटा दो। No random motion of particles. देखो थोड़ा सा भी मोशन होता है पार्टिकल्स का मतलब दे हैव सम एंट्रोपी, बट दे डोंट मूव एट ऑल, लाइक परफेक्टली स्टिल। दैट्स पॉसिबल ओनली एट 0 केल्विन, व्हिच इज एन अनअटेनेबल टेंपरेचर, बट हाइपोथेटिकल आइडिया। सो एट 0 केल्विन एंड परफेक्ट क्रिस्टल देयर नो डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या होता है मेटलर्जी में, जो आपके सिलेबस से हटा देंगे, बट यू कैन स्टिल गो एंड रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी इफ यू वांट टू। सो नो डिफेक्ट्स, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑर्डर्ड एंड यू हैव 0 केल्विन, देन यू से कि अच्छा एंट्रोपी की वैल्यू इज 0। नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम H and U, where you can't measure, right? But you can measure delta H, delta U. Here you can see that delta S is always S at the given temperature minus S at 0 Kelvin. This is not okay, this is 0 Kelvin. Okay? This is the big change between entropy and everything else. This has a value at all temperatures and you can calculate that value by comparing it to 0 Kelvin, जहां पे 0 Kelvin में इसकी 0 वैल्यू होती है। So S की absolute value आप निकाल सकते हो। This is the biggest difference. And this is the third law of thermodynamics, which I am quite confident is not there in your syllabus. So I'm just going to quickly open NCERT and see कि मैंने कितना आपको NCERT के बाहर already मैं पढ़ा चुका हूँ। And I don't mean that as a joke. I'm seriously going to just check. Right? I'm quite confident in ही NCERT में, but we'll just check. Yeah, this is the part that we're going to lead to. यहाँ तक था Gibbs to do. Don't worry, we'll do this. We'll do all of this. ये बचाए करने के लिए. No, this is not there. Anyway, it's okay.
वी हैव डन दिस, डोंट वरी, ये सब हम लोग कर चुके हैं, राइट, वी हैव डन ऑल ऑफ दिस। थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन था, तो आई थॉट विल कवर दिस थर्ड लॉ एज वेल। ऑलराइट, स्वीट, बढ़िया। Here's a quick question. For this reaction, delta H की वैल्यू दी गई है, डेल्टा S की वैल्यू दी गई है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पे होगा? Can you figure this out? This is positive. This is also positive. I gave you the example of this. इसको ट्राई करोगे? आस्तिक, शुभी, अतमजीत, भाई साहब इतना जल्दी! Look at that. That's a very good guess. If it was a guess, very good calculation. If not, how did Atamji get so quickly? There's a trick to doing this in 5 seconds. We'll talk about that. Okay. अगर आप इसको एक मैथमेटिकल चीज की तरह देखें, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस, ठीक है, तो इफ आई प्लॉट इट लाइक दिस वर्सेस डी, क्या डेल्टा जी वर्सेस डी अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो लुक्स लाइक डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव है, मतलब कि ये स्लोप ऐसा होगा, राइट, है ना? Cool. This is delta H and this is T delta S, T कर रहे थे ना, हाँ, तो ये स्लोप हो जाएगा आपका डेल्टा S, राइट? सो व्हाट डू आई डू ओवर हियर? व्हाट इज दिस लाइन जहां पे कट हो रही है, ये क्या है? व्हाट इज दिस लाइन? इस लाइन का, इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का वो मतलब है कि देखो, एट राइट हियर डेल्टा जी चेंजेस साइन, है ना? तो at this point delta G is equal to 0, so I put delta G equal to 0, तो I put delta H equal to this। अच्छा, तो I get T value। अरे वाह, ऐसे निकालते हैं टेम्परेचर। बट टेम्परेचर, oh clearly, yeah, look at that, if I increase temperature then the reaction becomes spontaneous। so देखो, ग्राफ में बनाने से तुरंत ये क्लियर हो गया कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये पूरा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। And clearly there's only one option that gives you temperature greater than 298, which is 425 Kelvin, hence this is the answer। खत्म, है ना? कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ग्राफ से करो तो। कैलकुलेट करना हो तो कर भी सकते हैं, गुड जॉब शुभी, अतमजीत, एक्सीलेंट वर्क ब्रो। अगर करना चाहो तो हम लोग आराम से कर भी सकते हैं। यू राइट दिस एक्सप्रेशन डाउन टू फाइंड टेम्परेचर दिस थिंग, डेल्टा जी, साइन चेंजेस एट डेल्टा जी इक्वल टू 0, करो, डू ऑल ऑफ दिस एंड 425 केल्विन इज द आंसर। नाउ इट इज ग्रेटर और लेसर, हाउ डू यू फिगर इट आउट? मैंने ग्राफ से आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कूल, राइट? दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ दिस थर्मो, यू कैन डू इट विद ग्राफ्स। ऑल राइट, ऑसम। एक और सवाल करें, एक और सवाल करते हैं। ये देखो रिएक्शन X2O4, some X could be anything, gives you XO2, it could be N actually, nitrogen, yeah that works, but liquid नहीं होता है, छोड़ो। डेल्टा U दिया है, डेल्टा S दिया है, डेल्टा G क्या होगा? कुछ नहीं करना है, yes should be awesome। What about this one? इसको कैसे करोगे? How do you get delta H from here? We can do this, please try it out, I'll give you a minute, try करिए इसको while I order my food। डिनर ऑर्डर किया जाए, प्लीज ट्राई करिए। ट्राई करो, टेक अ मिनट, इट कैन बी डन आसानी से। बस 2-3 रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। एक तो बेसिक रिएक्शन है डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये दोनों यूज करो, हो जाएगा। दैट्स जस्ट दीज 2 इक्वेशंस। सी, केमिस्ट्री वेरी सिंपल डूड। मैथ्स में आई नो योर मल्टीपल वेरिएबल्स ऑन दैट, केमिस्ट्री वेरी चिल दैट वे, एटलीस्ट द मैथ एंड केमिस्ट्री वेरी चिल। बस अरिथमेटिक है, ट्राई करो। व्हाट डू ऑर्डर, एनी आइडियाज? आई एम जस्ट किडिंग, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन आउट, आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू गेट। Oh, it was great. Restaurant packaging was great, bro. Do you need any help on this? The 2 equations I was talking about was this and this. इन दोनों इक्वेशन को आपको यूज करना है। Make sure that you convert kilo to 10 power 3. That's the only thing you have to be careful about. The rest of it is very doable. Atamjeet on fire बताते हुए D. Atamjeet, are you sure? Are you absolutely sure about this one? एक बार अपना कैलकुलेशन चेक करो। Thanks for that quick answer, Atamjeet, but just try your calculation. एक बार देखो प्लीज। So, what do we do from here? Delta U is 2.1 kilocal. R की वैल्यू 2 होगी अतमजीत। अगर आपने maybe I don't know what we have done, but if it is possible that Atamjeet has taken R to be 8.3 something, I don't know, maybe. R की वैल्यू होगी 2 because we are talking about calories, right?
Now, coincidentally, the one that you eat, 709612, 709612. That's my OTP, not related to any of this. I'm still ordering food. So, delta Ng, is it 2? Yeah, delta Ng is 2. Kyunki I have 2 moles here and no moles here. Okay, sweet. So far, so good. You're good with this, no? Delta U is Q plus W. Delta H is equal to Qp is equal to delta U minus W, which is delta U minus of minus P delta V, delta U plus delta NGRT. That's it. यही हमने यहाँ पे लिखा है. Okay, 2 into 2 into 300, 2.1 into 10 power 3. इससे मिल जाता है हमको to be some value. Let me just put that right over here. Okay. Now the good thing is कि ये हमने 2 into 2 into 3 is 6, right? नहीं 6 into 2 is 1.2. Sorry. Why 1.2? क्योंकि मैं 10 power 3 लिख रहा हूँ ना. देखो ये 1200 हो रहा है, agree. 4 into 3 is 1200, right? I agree. But I will just write as 1.10 power 3 ताकि हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन आसानी हो. डेल्टा डी का ये वाला पार्ट मैंने कलर इसलिए लिखा बिकॉज ये डेल्टा एच है. ठीक है, दिस ऑल डेल्टा एच. ओके, कूल. दिस इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. पर्पल में लिखा है, कलर कोडेड है सब. कलर, लव कलर्स ब्रो. So should you. You don't have to do all this when you are doing this question. Please don't sit and make things color coded unless you have a digital pen tab and stuff. Anyway, moving on. 300 Kelvin temperature hai. Okay, we're good here. Minus, everything is great. So according to me, what I get from here is 2.1 plus 1.2 minus 0. No, not minus 0.6. Minus 6. है ना? अच्छा, आई थिंक आई नो व्हाट अतमजीत डिड. अतमजीत ने उस समय ऐड कर दिया था बेचारे को. इफ यू ऐड दिस देन यू गेट 9.3. इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस देन यू डू 3.3 minus 6 which is minus 2.7. आंसर हो गया बी. बिल्कुल सही. यस आस्तिक, अतमजीत बिल्कुल सही. एक्सीलेंट वर्क. सो दिस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, दिस डेल्टा जी नॉट की जो हम लोग बात कर रहे थे, इसको जो है एक एटमॉस्फेयर पे होता है. ठीक है, वी गॉट दिस फिगर आउट. एंड यहां पे दिस वाज यूनिवर्स कॉन्सेप्ट एंड दिस वाज ऑल ऑफ दिस. ओके, दिस समरी ऑफ एवरीथिंग वी हैव डन सो फार. लेट मी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस आइडिया, राइट? कि अगर आप इसको रिएक्शन में देखोगे, जस्ट लाइक डेल्टा एच समेशन ऑफ क्या था, हाँ, गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस दैट ऑफ रिएक्टर्स. ठीक है, सेम चीज. ऑसम. इक्विलिब्रियम पे हम लोग एक नई चीज करते हैं. And yeah, I'll be honest with you, doing this now makes no sense. Okay, but since it's an NCRT, we're doing it now. We'll do it properly when we do equilibrium. So remember, S वाला function जरूरी है. ठीक है. Now on the same graph, on a different scale, I can do this. I can plot this. क्या किया जाए? Should make it believable or completely unbelievable. Let's say कि G का scale ही अलग है. ठीक है, scale ही अलग है. कंप्लीटली अलग है. Oops. Even then, oh shoot. Even then, ये जो लाइन जो कोइंसाइड कर रही है, that is the equilibrium process, right? I have the luxury of changing colors as many times as I like. It doesn't matter, right? इसका भी हम लोग let's say it's like that, something like that. The shape of the graph doesn't matter, but the peak is delta S equal to 0, and यहाँ पे the well is delta G equal to 0. ठीक है. So equilibrium में delta G 0 and delta S 0, S होता है maximum, G होता है minimum. ठीक है, equilibrium का ये आइडिया है. equilibrium का मतलब क्या है? equilibrium मतलब कि it is that well जहां पे मैं थोड़ा सा भी एफर्ट लगाऊं तो या तो ऊपर नीचे आ सकता है. Similarly at the top, यहां भी वहां भी आ सकता है. ठीक है, that's what equilibrium means. Just need a little push. We define, yeah, there's no point in doing this. I'll be honest with you, it's there, we can talk about it, but this is going to make no sense to you unless we sit and do the whole of equilibrium. Yeah, equilibrium करेंगे तभी this will make sense. अभी this is just like some random जादू टोना. ठीक है, that delta G is something called delta G naught plus RT ln Q. Like what? Yeah, at equilibrium कुछ होता है और more magic happens. This I have proved. This I have told you, right? This works. This works. This we will do when we do the next chapter. When we do equilibrium, then हम लोग ये सब करेंगे. It doesn't make sense to talk about it right now. It's an NCRT, so we've spoken about it.
ये क्यू होती क्या भला है, लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है क्यू का कॉन्सेप्ट एंड ऑल ऑफ दैट. सो ये जो हम लोग यहाँ प्लॉट कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकली वी आर डूइंग क्यू इटसेल्फ. व्हाट इज दिस? दिस इज ब्लू कलर यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन होपफुली थोड़ा कम हो. क्यू इज रिएक्शन प्रोग्रेस, मतलब कि रिएक्शन कितना आगे गया है. क्वालिटेटिवली हम लोग समझ सकते हैं, मैथमेटिकली थोड़ा मुश्किल होगा अभी. जस्ट डिड द रिएक्शन जस्ट स्टार्ट, ओ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. इट लुक्स लाइक इट्स अ डेस्टिनी, like it's a journey to get there, something like that. Yeah, अगर for example if I take say x giving y, मैं 1 मोल लिया स्टार्टिंग में, फिर बनता है 0.7 मोल, फिर बनता है 0.5 मोल, फिर बनता है 0.4 मोल, तब ये बनेगा 0.3 मोल, तब ये बनेगा 0.5 मोल, तब बनेगा 0.6 मोल. ठीक है. सो आई कैन डू सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल जगलरी विद दिस टू गेट द वैल्यू ऑफ q. ठीक है. एंड इट सो हैपेंस कि दिस इज in this way q is increasing and in this way q is decreasing. For now just take it as that. ये तो सम सिंपल है ना, समझ में आ गया. रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है. अब ये सब मैं एक ऐसे ही ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूं. विल डू दैट. इक्विलिब्रियम बहुत ग्राफ्स आएंगे, बहुत मजा आएगा. यस, रिएक्शन कोएफिशिएंट एग्जैक्टली. खैर, या डू दिस अ फॉर्मूला, ऑसम ब्यूटीफुल फॉर्मूला. एंड एट इक्विलिब्रियम मग कर लो अभी क्या करें. इन इक्विलिब्रियम द चैप्टर विल डू दिस इन प्रॉपर्ली. ठीक है. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम. ये इस जगह पे जो मैंने आपको ये दिखाया ना, एट दिस पॉइंट इन द रिएक्शन प्रोग्रेस you get this math right here कि delta G naught is minus RT ln K where K is equivalent constant. What is equivalent constant? Mathematically मैं आपको बताऊंगा अगली बार. But since it is here जबरदस्ती in NCERT, here are some more things that are not going to make any sense to you. You know what? I'm not going to do this now. It doesn't make sense. Come back, watch my equilibrium sessions. वहाँ पे आराम से करेंगे. So you seen Men in Black? He has a thing which is uses to flash you, like to erase your memory for the last 1 or 2 minutes. That's what I'm doing right now. That was not the sound it made for sure. The general idea ये है to take away from this कि अगर reaction complete हो रहा है, if the reaction is going to go to completion, then you say that it is spontaneous. अगर reaction शुरू ही नहीं हो रहा है, then you say कि it is non-spontaneous. ठीक है. This is the relationship. Mathematically we'll do later. ये सब बहुत चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं that may not make sense to you, but we'll do that later. You are watching Men in Black 3. That's great. No, dude, equilibrium is the best chapter. Astik, you love it. मेरे से पढ़ो यार. You will absolutely love physical chemistry. Not because I'm good at it. It's because I like it. If I like it, I'm going to make sure you like it. I'm a little good at it. At physical chemistry. So you can check out if you have some time. मेरी next class तो कुछ दिनों में होगी. But if you are eager, last year के session देख लो. वो सब बेंटो लिंक में equilibrium किया हुआ बहुत मजेदार है. और अगर सेशन नहीं देखना तो बुक पढ़ लो यार. NCERT नहीं समझ में आ रही तो there are some other beautiful books to read. Yeah, some of these may be expensive and hard to get, so please go and get second-hand ones. I don't want you to spend some ridiculous amounts of money unless you are sure that you can. अगर कर सकते हैं तो go ahead and get it. But if you feel that these books are expensive, please get second-hand books of it. All right, जो सब जगह मिलता है, बैंक में मिलता है, सब जगह I'm sure second-hand books मिलती होंगी. Amazing books for your JEE and NEET prep. The second one, Zubdal, is the best book for JEE Advanced for Physical Chemistry that I have come across. All right, thank you everybody for your time. ये सब चीजें हम लोग डिटेल में करेंगे इक्विलिब्रियम में. द लास्ट पार्ट स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा जी एंड के. मैंने आपको थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव आइडिया दे दिया है. मैंने बोला था ये वाला सेशन थोड़ा सा लंबा होगा. आई होप यू एंजॉयड इट एज मच एज आई डिड. दैट्स द एंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स. ऑलराइट, बाय. Yeah, absolutely, Astik. I've already given screenshots to the senior chap in my organization. If you give me more input, I'll send them over as well. Bye. Good night. See you all. I hope you had fun. Have an awesome weekend. Bye.